So there are the osteoblast present at the periphery, and at the more periphery there are the mesenchymal cells with fibers. These are the collagen fibers. और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे था मैट्रिक्स with irregular arrangement of the collagen fibers, and some osteocytes are there, and these osteocytes are present in a space that is the lacuna, and there are some processes are present in these osteocytes. These are the canaliculi. Basically this is the structure of the osteocyte. Osteoblast are cuboidal in the shape with eccentric nucleus, and these osteocytes are present in the lacuna with the nucleus of the osteocyte. इसके अंदर एक न्यूक्लियस होएगा इसका, और ये जो स्पेस है this is the lacuna, and these are the canaliculi of osteocyte which will be communicate with the another osteocyte for the passes of the substances. तो यहाँ पे ऐसा ही एक और ओसिफिकेशन सेंटर भी होएगा जहाँ पे सारा प्रोसीजर और होएगा. This is the third ossification center. So I have shown you the 3 ossification centers at that time जहाँ पे सारा प्रोसेस हो रहा होगा, और यहाँ पे ओस्टियोसाइट जो है वो ट्रैप हो गई. And there is a space in which blood vessels are present. यहाँ पे blood vessels होंगी. तो एक स्पेस ये हो गया, एक स्पेस ये हो गया, एक स्पेस ये होगा. Eventually what happens, all these spaces are connected to each other. When these spaces are connected to each other, or we can say these plate like structures are connected to each other, so there is a formation of a trabecules of the bone, in which, so in these trabecules of the bone there are osteocyte with collagen fibers and ground substance, and between these trabeculae there is a space. That space is known as marrow cavity, in which blood vessels are present, and outside there are the osteoblasts which are continuous transforming into the osteocytes, and these are secreting the osteoid. तो ये ओस्टियोब्लास्ट क्या कर रही हैं, जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं ये सिक्रीट करी जाएंगी, इनसे सिक्रीट होता रहेगा ओस्टियोइड. तो ये ओस्टियोइड है जो कि इनसे सिक्रीट हो रहा है. यहाँ पे मैरो कैविटी बन गई है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं, और जो ओस्टियोब्लास्ट इस ओस्टियोइड में ट्रैप होता जाएगा उसको बोलेंगे ओस्टियोसाइट. बट एट द पेरिफेरी there is no space present between the osteocytes. Osteocytes are tightly packed with each other. तो यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, तो यहाँ तक ब्लड वेसल्स नहीं आती हैं. तो यहाँ पे विदाउट स्पेस जो ओस्टियोसाइट की सेल्स डिपॉजिट हुई हैं विथ कोलेजन फाइबर्स, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन. कॉम्पैक्ट बोन. और ये जो पार्ट है जिसमें कि कैविटीज प्रेजेंट है इसको बोलेंगे स्पॉन्जी बोन, बिकॉज इट इज अ स्पॉन्ज लाइक बोन जिसके अंदर कैविटीज हैं और ब्लड वेसल्स हैं. और जो टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं पेरीफेरी पे, they will form the compact bone, and outermost area where the mesenchymal cells are present with collagen fiber. This will form the periosteum of the bone, in which the 2 layers are present. The one is the fibrous layer in which the collagen fiber is present, and the second layer is cellular layer where the osteoprogenitor cells are present. And time to time these osteoprogenitor cells will transform into the osteoblast. These osteoblasts, according to the formation of the bone, will convert into the osteocyte, and these lay down the matrix of the bone. That first it is the unmineralized matrix, but after adding the calcium this matrix will become the mineralized matrix. So there are compact bone on the side of the spongy bone, and spongy bone in between, and the compact bone at the outer side. So flat bone of the skulls will develop from this process. इसमें क्या होएगा, flat bones में I am showing you the example of one eraser. So in this eraser, this is the compact bone, this is the compact bone, and in between there is a spongy bone. Suppose this is the flat bone of the skull, and this flat bone has compact bone in each side, and in between there is a spongy bone. यहाँ पे कुछ गैप आपको दिख रहे हैं. These gaps are the marrow cavities in which red bone marrow is present. After
the birth in the adult life this red bone marrow is replaced by the yellow bone marrow. और ये जो part है इनको बोलते हैं trabeculae of the bone. In this trabeculae the components of this trabeculae is osteocyte with collagen fiber and the ground substance and calcium. First there is a irregular arrangement of the collagen fiber, so this first formed bone is known as woven bone, but after some time this irregular pattern of the collagen fiber is transformed into the lamellar pattern. So the collagen fibers will arrange into a lamellar pattern in which some osteocytes are present, and then this is the first lamella, this is the second lamella. Between two lamellas there are trapped osteocyte, then there is formation of the third lamella. So in the trabeculae of the spongy bone there is a lamellar pattern is formed after some time. So the first formed bone is woven bone, and after that the bone which is forming is lamellar pattern of the bone in spongy bone. Same lamellar pattern of the bone is formed in the compact bone where the osteocytes are tightly packed with each other. So these are the osteocytes of the compact bone. Compact, as name suggests, it is a dense type of the bone. So all the lamellar bone which are present in the body are of compact and spongy type of the bone. So as this is a flat bone of the skull, so there are again compact osteocytes are present, and outside there is the fibrous and cellular layer, that is periosteum. So this is the periosteum and this is the compact bone. These are tightly packed cells and these are the osteocytes with some collagen fibers. This is compact bone and this is periosteum, in which two layers are present, fibrous layer and osteoprogenitor cells are present. And this is the spongy bone, in which there are gaps are present and the osteocytes are present between the two lamellae, and the blood vessels are present in the spongy bone. So it is vascular in the nature, but in the compact bone the blood vessels enter through this periosteum. When the blood vessels enter through this periosteum, so these blood vessels are arranged in between the compact bone, between the osteocyte. So there is a canal like structure is formed between the osteocytes of compact bone. In this canal like structure there is blood vessels are present, in which artery and vein will be present. So this is known as the canal of the compact bone or Haversian canal, and this system is known as Haversian system, in which there is a canal is present in the compact bone, that is the Haversian canal, and the osteocytes are arranged around this Haversian canal, and through this Haversian canal or central canal the blood vessels supply to the compact bone. So this is the formation of the intramembranous type of the bones. These are flat bones and these are developed in a membranous sheet, in which first in the embryonic life there are mesenchymal cells. These are present near the blood vessels or capillaries. तो उसके बाद ये mesenchymal cells जो हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगी ओस्टियोब्लास्ट में. ओस्टियोब्लास्ट का जो न्यूक्लियस होता है वो इसेंट्रिक होता है, और जैसे ये ओस्टियोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होती हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करती हैं फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स. फर्स्ट इट इज अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता नहीं है. कुछ जो ओस्टियोब्लास्ट होती हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी, जिनको आप बोलेंगे ओस्टियोसाइट, और ये कैल्शियम भी ऐड हो जाएगा. कैल्शियम ऐड होता है, इसकी मेम्ब्रेन में एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है जो कि इसके अंदर कैल्शियम ऐड करेगा. और पेरिफेरी पे स्टिल कुछ मेसेनकाइमल सेल्स हैं और कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि बाद में बनाएंगे कॉम्पैक्ट बोन एंड पेरियोस्टियम ऑफ द बोन. सो फर्स्ट देर इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पॉन्जी बोन. तो कुछ ओस्टियोसाइट जो हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो गई हैं. दिस इज द वन ओसिफिकेशन सेंटर. सेम देर विल बी अनदर ओसिफिकेशन सेंटर्स. तो वो जो ओसिफिकेशन सेंटर्स का पार्ट होता है वो आपस में यूनाइट हो जाएगा, एंड इवेंचुअली देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रैबिक्यूलेज ऑफ द स्पॉन्जी बोन. एंड these trabecules of the spongy bone having the osteocyte with canaliculi present in a lacuna, and there is irregular arrangement of the collagen fibers initially and calcium. But after some times this irregular arrangement is replaced by the regular arrangement of the collagen fibers, that is known as lamellae, lamellar pattern of the trabeculae.
ऑफ स्पॉन्जी बोन। तो उसमें क्या होएगा, नाउ आई एम शोइंग यू इन दिस अनदर ट्रेबिक्यूली, तो उसमें ये इस तरीके का लैमिलर पैटर्न जो है वो बन जाएगा, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर। सो दिस वोवन बोन इज रिप्लेस्ड बाय दिस लैमिलर बोन. So each trabecule is connected to each other and leaving a space in between the trabecule. That space is occupied by the blood vessels, and this is the marrow cavity of the spongy bone. So spongy bone is vascular in the nature, and each side of the spongy bone, the osteoblast is again secreting the osteoid, and some of the osteoblast will get trapped into this osteoid, जो कि सेम प्रोसीजर फॉलो होएगा, और उन osteoblast को आप बोल देंगे osteocyte, जिसके अंदर क्या होएगा, osteocyte होएगी और कोलेजन फाइबर होएगा. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में फ्लैट बोन ऑफ स्कल की, तो बीच वाला जो पेंसिल वाला स्पेस है, दिस इज स्पॉन्जी बोन, जिसमें कि ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं और कुछ ओस्टियोसाइट जो है वो इसमें ट्रैप्ड हैं. दीज आर द ओस्टियोसाइट्स. और इसके ईच साइड पे, दोनों साइड पे, यहाँ पे ओस्टियोसाइट्स हैं. दीज आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, सो द ब्लड वेसल्स कमिंग थ्रू द पेरिओस्टियम एंड विल सप्लाई टू दिस osteocytes of the compact bone, and these blood vessels will be forming the Haversian system. Here is the lamellar pattern and here is the lamellar pattern. So दोनों ही स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट में लैमिलर पैटर्न होएगा. स्पॉन्जी बोन के दोनों साइड में कॉम्पैक्ट बोन होएगी. यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट बोन जो है वो ब्लू कलर से ड्रॉ करी हुई है. और आउटसाइड जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, दिस विल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स. वो अभी ओस्टियोब्लास्ट में चेंज कन्वर्ट नहीं होती हैं. एंड हियर आई एम शोइंग यू विद दिस स्काई कलर. तो यहाँ पे कुछ osteoprogenitor cells होंगी. These are cells of periosteum and these are still osteoprogenitor cells. According to the requirement, these will convert into the osteoblast and osteocyte, and outermost layer is of fibrous layer which is made up of collagen fibers. So these are the layers present in the bone, flat bone of the skull. Outside periosteum with fibrous and cellular layer. Then we have the compact layer of the bone in which osteocytes with canaliculi are present, and in between the osteocytes there are the blood vessels present in the canal, जिसको बोलते हैं Haversian system. And between the two parts of the compact bone there is a spongy bone. There is a marrow cavity is present in the spongy bone in which the blood vessels are present and the lamellar pattern is present. Collagen fibers regularly arranged होते हैं और उसके बीच में ये osteocytes होती हैं. So this is about the intramembranous ossification, in which there is compact bone, and between the compact bone there is a spongy bone with trabeculae or the plate of the bones having osteocyte, collagen fibers and ground substance and calcium, and there is a marrow cavity with blood vessels. So this is the spongy bone, and each side to the spongy bone there is a compact bone. compact bone के अंदर marrow cavity नहीं होती है, उनमें blood vessels बाहर से आके Haversian system बनाएंगे. So all these components are present in this bone. सेल्स आर प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स. फाइबर्स आर प्रेजेंट, जो कि कोलेजन फाइबर्स हैं. एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट, जिसमें कि प्रोटियोग्लाइकेंस होंगे और ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, और इसमें होएगा कैल्शियम विच विल प्रोवाइड हार्डनेस टू द बोन. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रामेम्ब्रेनस टाइप ऑफ द बोन, एंड दिस इज नोन एज द इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. थैंक यू.